नहीं ज्यादा नहीं भेजना है ना। उस दिन जितना और डब्बा में लेते हैं क्या सारे देख लेते हैं सारे। इसके पॉइंट सारे हमारे पास शूट में चले गए।
सरकार बनाने के लिए, और लेटेस्ट अफवाह समर्थन में आपको दूंगा। आप अपना राज्यपाल को अपना सरकार बनाने का दावा पेश करो। मैं आपके समर्थन के लिए लेटर बनवा देने जा रहा हूँ, फिर समर्थन खींचूंगा, इससे आपको समर्थन दूंगा। और मतलब टाइम नहीं बोला, जल्दी कीजिए बस, तुरंत। ठीक है भैया, लंगोटा आपने तो खाई थी, तो बाजू इधर देखा तो उधर तो दूसरे 6 आदमी थे, हरकत में आ गई, बोला जल्दी करो, गाड़ी लगाओ, ये करो, ये करो। तो क्या हो गया? तो हमारे पास फोन कर रहे हैं, बोला अरे यार क्या हो गया? अरे बाल के उधर मायावती को उधर से फोन रहा है, बोला यार check 1 2 3. Okay. 1 Okay. 1
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कादिर वली, जो कि द मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। मंच पर उपस्थित श्री टी विक्रम, आईजीपी के सर, उपस्थित अधिकारीगण और इसके साथ ही ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए बल के सभी अधिकारी और जवानों,
ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इतने मशहूर वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया हुआ है हमारे बीच आए हैं और एक बहुत ही उपयोगी जानकारी जो कि मिलेट्स के ऊपर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पौष्टिकता से भरपूर खाद्यान्न के लिए, खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन सब के ऊपर में बहुत ही उपयोगी जानकारी देंगे। इसके पहले कि हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री थुरलापति विश्वनाथ कमांडेंट ग्रुप केंद्र बेंगलुरु को कि वे यहाँ मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि का औपचारिक रूप से सम्मान करें, उनका विवरण दें। श्री थुरलापति विश्वनाथ कमांडेंट ग्रुप केंद्र बेंगलुरु। Respected senior officers connected through online from various locations of this organization and field battalion से जुड़ा हुआ काफी stations है. I think I was told sir around 420 stations have been connected with this webinar and all. And our chief guest of today's Padma Shri Khadir Wali sir, IG sir, and other officers present here. Good morning to all of you. In fact, we have with us today very important personality in the country today who has been relentlessly working for the food, changing the food habits of the people because of the changes that is taking place. Various kinds of lifestyle diseases coming up in the human population. So he has been working for the almost for the last 25 years relentlessly. He has been working for the changing the food habits because of the changes that is taking place. Born in the year 1958, Dr. Khadir Wali had a doctorate in steroid biochemistry from the most prestigious Indian Institute of Science, Bangalore. Later, he did his research studies in USA and worked for some time, and back to India. After seeing what is happening in the society, particularly the increasing lifestyle disorders on various ways, he decided to go with the mission, and as single person, he has been traveling in this route for the last 25 years. Sir is in addition to that, इसके साथ साथ वो अपना फार्मर्स को एजुकेट करने में अलग मॉडल्स को लेके thousands of farmers have been groomed in such a way, because we all groom in such a way that we know only the rice and wheat. Millets शायद पहले जमाने में होते थे, हमारे पहले जनरेशन्स के पहले, बट बाद में वो चेंज होके हम सभी उस जमाने में पैदा हुए थे जिसमें हम राइस को ही देखने लगा और वीट को ही देखने लगा. और सर की रिसर्च के हिसाब से कहता है कि ग्रेन्स को दो या तीन तरफ से डिवाइड करता है. उसमें जो हम खाते हैं दे आर द नेगेटिव ग्रेन्स, particularly the wheat and rice, which are considered as the negative grains, which is producing a lot of side effects in our human bodies. And the positive grains are Siridhanya karke. He says that there are 6 millets which can be used as very positive grains, which is good for the health and all these kind of lifestyle disorders which we are getting today, whether it is obesity, whether it is diabetics, whether it is hypertension, whether it is various kinds of liver and kidney issues. All these were only because of these food styles what we are having. इसके बाद जो हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन से वो और ज़्यादा फूड्स का चेंजेस आ चुका है, जिसकी वजह से
we all having the children with a lot of obesity, hypertension issues, even at the young early age the diabetic issues. So इसको लेके सर ने काफी research किया, developed a lot, and in his research it was a single man journey. He achieved a lot, and finally on his thoughts the government of India also has taken up. It's a big challenge, and United Nations have declared last year, the 2023, as International Year of Millets with the initiative of the government of India. And Dr. Khadirwali has received the Padma Shri Award last year for his service to the country. Sir, CRPF as an organization with a 3.2 lakh force, fighting basically against the various kinds of law and order situations across the country, particularly in the Jammu and Kashmir, then northeastern states and the left-wing extremist states, and mostly the person have to live away from the families. सब मैसेज में खाना पड़ता है. मैसेज की जो यूनिट्स के अंदर जो मैसेज बनी हुई है उसके थ्रू खाना चलता है. तो इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव से हमने अभी स्टार्ट किया है मिलेट्स को यूज करना फॉर द लास्ट 1 year or so. Initially for 10% of the food, later for 20%, and I think now it has been told to increase the millets in the menu for 30%. So this is the though it is there, but millets को being a food, so इसको किस तरफ से यूज करना है, किस तरफ से इसको what are the benefits, because lack of understanding on various ways, and it is very difficult to change the food habits in the initial days. So with all aspects, it is a great privilege to have you with us today. And now I request sir to deliver his inspiring lecture on these issues, what is required for the human race to change their habits. So what is the importance of millets, and these all issues he will take up the a special session with all the personnel. I hope all stations across the country who have been connected with this webinar now, please try to hear patiently and try to understand the issues he is being taking up. It's a very wonderful initiative, and I sincerely thanks our IG Secretary KK Shri Vikram for this initiative, and I wish this event to be a success, and we wish that we will be able to accept this change in our dieting patterns in the days to come in a bigger way. Thank you. धन्यवाद महोदय. और अब यह अवसर है जब हम अपने मुख्य अतिथि का औपचारिक रूप से स्वागत करें. मैं आदरणीय श्री टी विक्रम आईजीपी सर से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि को बुके देकर उनका स्वागत और सम्मान करें. जोरदार तालियों के साथ ये हमारे लिए बहुत खुशी के पल हैं, बहुत गौरव के पल हैं, जब इतने मशहूर वैज्ञानिक जिन्होंने मिलेट्स के ऊपर में इतना गहन शोध किया है कई दशकों का हमारे बीच हैं. Now we will play a small video clip. डॉक्टर खादरवली दुदेकुला, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग. Thank you, sir. Thank you.
तो आज हमारे लिए बहुत गौरव के पल हैं जब इतने मशहूर वैज्ञानिक हमारे बीच आए हैं और कई दशकों के गहन शोध के बाद जो आपने एक उपयोगी ज्ञान अर्जित किया है हमारे बीच में साझा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इसको बहुत गहराई से सुने और सर के जो वक्ता हैं उनके अपने पूरी जानकारी के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप उनसे जरूर प्रश्न पूछें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर खादर वली सर को कि वे कृपया मंच पे आएं और यहाँ पर आकर हमें अपने ज्ञान से संबंध। Good morning, and it's my privilege and good luck that I'm addressing you people who actually protect us inside the country. It's really my privilege, and I feel very happy to address you all. And I actually am a scientist out and out of the box scientist. The established science is basically run by Western thought process and Western scientific establishment. Even today, if you search for Google, even today, if you search the Google, that who said Earth rotates around sun, you will get Copernicus or Galileo. Fact of the matter is, hundreds, 1,000 years ago, Aryabhatta said that. So that is the science that the so-called present scientific establishment follows. They have no courtesy even to correct it even today, 2024. So that means the established science or scientific community is not really scientific. And I will prove it to you in a matter of 3 to 5 minutes. Now we know all over the world, diabetes is incurable, BP is incurable, thyroid is incurable, rheumatism is incurable, autoimmune systems are incurable. And type 1 diabetes, absolutely no. Nowhere in the world anyone can cure, and if someone cures, it is voodoo magic, it is humbug, it is unscientific, all this blah, 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 blah they talk. है ना? तो क्या होगा, अभी आपको हम एक माँ को दिखाएंगे बात करके 2 मिनट का वीडियो, देख लीजिए। लिंक मिला है ना? हाँ, switch off the lights so that it just 2 minutes of the first part. Dr. Khadar lifestyle. Lights dim kar. I am Shruti. I'm from Bangalore. Last year, my son was diagnosed with type 1 diabetes in the month of September. He was barely 13 at the time. He had to be rushed to the hospital. He was in the hospital for about 7 days, where his medication or treatment included him taking insulin injections. And even when we got back, we were told that, this is how his life is going to be, where he has to manage his blood sugar levels only with insulin injections, and that he had to take it for about 4 to 5 times a day.
And not just that, in the middle of the night, we had to check his blood sugar levels every day so that he doesn't enter a hyperglycemic state. And that is very painful to see, right? Thankfully, on the 9th day after his discharge, our very close relative, because of his experience with Dr. Khader, recommended us to go consult him. So I took my son along to Mysore and we saw Dr. Khader. Dr. Khader immediately put us at ease. He said, you know, my son does not have to be dependent on insulin injections for the rest of his life, that there was another way that included switching to a millet diet, stopping anything that was processed, stopping milk and milk related products, switching to an organic diet, and following a good physical regime, that is a good exercise routine. And immediately we started that. Also, Dr. Khader, in his disease protocol, he recommends for diabetes, he recommends taking concoctions of certain leaves in the morning and having bull-driven oils. There are 5 types that he recommends for diabetes. So we started doing that for my son. And in a week's time, we could see how his insulin dosage had to be reduced, right? For every meal, in fact, we had started giving him lesser and lesser because his blood sugar levels were getting controlled with lesser dosage of insulin. And believe it or not, at the end of 1 month, we could, stop his medication completely. He was just managing it with whatever Dr. Khader recommends, with the millet diet, with drinking the concoction of certain leaves, with the bull-driven oils, and following a healthy regime. So we are extremely indebted to Dr. Khader for his timely help. We are grateful to him because he's been our savior. And I recommend that everybody follow Dr. Khader's protocol. Even if you're healthy, please switch to a millet diet. Stop eating gluten and rice because it does more harm than good to our bodies. All of us at home eat whatever my son has to eat to manage his health, and that is great support when you do that, and we can see the difference even in our health. So thank you again, Dr. Khader. You've been our savior, as I've mentioned time and again, and I recommend that everybody follow a millet diet to stay healthy, to stay stronger, and to be happier. नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। सितंबर 2021 में मेरे 13 साल का बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि ज़िंदगी भर उसका शुगर लेवल्स मैनेज करने के लिए उसको इंसुलिन इंजेक्शंस लेना ही करना पड़ेगा करके। जब हम इतने परेशानी में थे तब मेरे हस्बैंड के मामा जी ने that was in Hindi and Kannada, like that. So when type 1 diabetes, that is kids, pancreas is not working, we have been able to reverse in a matter of month. And the kid has been all right. It's been 4th year. He has no problems whatsoever. And we have hundreds of these cases. And there are almost maybe lakhs or even 1 crore diabetic patients who have eaten millets and then dropped all their medicines in a matter of 3 months or 6 months or 1 year, depending upon their commitment to the protocol. So all along the establishment, the scientific communities, with all their research spanning for 50 years, have declared that these are incurable diseases and declared them as lifestyle diseases. I mean, it cannot be true because below age of 8, 10, kids are now born with type 1 diabetes, hole in the heart, mentally retarded kids, and people who do not know themselves who they are. All these issues as a whole, people are talking about lifestyle diseases, but what I'm looking at is the future generations completely dysfunctional. Completely dysfunctional. This is something the establishment doesn't want to even
talk about. They put everything under the carpet. They have not cured a single diabetic case. There are gangrene patients, retinopathy patients, bone issues patients, all due to diabetes. And then each case is actually running into lakhs and millions of numbers in the world. That means there is absolutely nothing that these so-called doctors, sorry, with all due respect, because the word doctor means you need to cure a disease. They have not been curing any disease, they have been only managing the diseases. So it has become an establishment of making things go round and round because they have been feeding us that kind of food that generates diseases. Because rice and wheat do not have the mechanism to hold back the glucose that is released into your bloodstream. As and when you eat, in a matter of 30 seconds, it pumps the glucose into your bloodstream like flood. And that causes homeostasis of the blood disturbance. That is, the concentration of the glucose goes beyond 5 to 6 grams in your total blood. It becomes non-homeostatic. That is, homeostasis means समतोलन. हिंदी में बोलते हैं समतोलन. इतना से ज़्यादा ग्लूकोज खून में बहता है तब खून गाढ़ बन जाता है. It becomes thick. तो जब खून थिक हो जाता है, आपका हृदय को पंप करने में दिक्कत होता है. जब क्या होता है, आपको बीपी पेशेंट डिक्लेयर किया जाता है. क्यों बीपी आ गई है? क्यों? खून में ग्लूकोज बढ़ गया है. कौन बढ़ाया है? कौन बढ़ाया है? आपने एक चीनी, गेहूं, चावल खाने के बाद ये हो रहा है. क्योंकि 100 years ago, when people didn't have rice, wheat, sugar as their main food, all over the world, all over the planet, no one had rice, wheat, sugar. Not that they were not there before, but it was not available for people. Very rich people, very few people used to eat. And then also, only these guys got diabetes, BP, diseases. People who ate something else, roots or millets. In fact, millets are the grains that have been there on the planet time immemorial. 6,000 varieties of C4 grasses. These are called C4 grasses. They are universally present, and out of which 200 grains are there on this planet for all living things to be used as food, starting from birds to pigs to cows, if you have cows in your country. I mean, there are no cows on this planet all over the world. Only in India there are cows. So like that, you go to some other place, there are only camels. There you go to some other place, there are only horses. So all things do not exist everywhere. The same way, the food has to be there for everyone, actually. So God created C4 grasses that can make food without water. Whereas rice and wheat or C3 grasses, this is some little science, don't bother too much about it. C3 grasses can make food only if there is water. That means you can grow rice and wheat where there is water, there is fertilizers, everything falling in place. That means they are very restricted in its wants. So you cannot grow rice and wheat everywhere. In fact, it is not our food at all. Human gut gets sick because it releases glucose directly into your bloodstream without any time. Are you getting this point? This is the most important point. And these guys, so-called scientists, for the last 100 years have been working feverishly and declaring that
diabetes is incurable. Can you believe this nonsense? What all it takes for your blood to become thin again is not to feed rice and wheat and sugar, because sugar, the moment it goes inside, it is absorbed even in your buccal cavity and bloodstream glucose increases. It doesn't need to even go to the tummy and then get digested. All that is not necessary. So the basic science of biochemistry is floundered, and all these experts, so-called green revolution experts, came in and said, hey guys, you are all using primitive food, bird feed, pig feed, animal food you are eating. You are primitive fellows. Eat premium food. We are here producing rice, 30 quintals in an acre, which you cannot produce more than 8 or 9 quintals. You are all do not know what agriculture is. We are the experts. All at a sudden, all over the planet, green revolution experts created agriculture. And all along before, the farmers were growing food without even rain. Just in winter season, kodo millet grows on its own. इतना सुलभ और सरल रीति से हम हमारा खानों को हर जगह पर उगाते थे और उबाल के खाते थे. ये लोग आके सारा जगह पे, एक देश नहीं. Can you believe this nonsense that the whole world eats the same stupid thing? And sorry for my words. All the human race eating rice and wheat is the most stupid thing that can happen on this planet. Because we cannot grow rice and wheat. Imagine, Punjab only can grow wheat. And when I say you eat millets, oh, only that region only where you grow it. Then why are you eating wheat? No one should be eating wheat other than that Punjab people, because no one else can grow this wheat. In fact, even that proposition is wrong. You have to have universal food. That means anywhere and everywhere you can grow, and that characteristic builds, fits only to millets. And millets are not one grain. There are 200 varieties all over the planet, and they can grow without water. The genomic content of millets is 8 to 9 times bigger than C3 grass of rice and wheat. Rice and wheat, when you give water, it increases the yield, because from C3 to C4, ये C3 बोलते हैं grasses, to C4, ग्लूकोज बनाने में, धान बनाने के वक्त ये जीव रासायनिक प्रक्रिया अलग होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, किरणजन्य संयोग क्रिया या द्युति संश्लेषण क्रिया बोलते हैं संस्कृत में. ये तरीका अलग है, और मिलेट्स में दाना बनाने का तरीका C4 बोलते हैं. ये रिसर्च आज तक all these scientists put together have not bothered to do much. एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं है धरती में. 2017 में रातों रात एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है भारत देश में, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च. अभी आप वहां जाके देखा तो उसका कैंटीन में क्या खाते हैं, गेहूं और सफेद चावल. अच्छी, कल जाके देखो. That means that's the kind of commitment these so-called research scientists have. And this should have been our food. ये हमारा खाना था, रहेगा, because in another 5-10 years, human race cannot go rice and wheat. Because it's not our food. Its limitations are very. You cannot grow if the temperature increases another 3 degrees. हम ये मिलेट्स को 50 डिग्रीज में भी उगा सकते हैं, 10 डिग्रीज में भी उगा सकते हैं, है ना? हो गया बात. कहां पे भी, कभी भी, कैसे भी उगाने का
चीज ही हमारा खाना होना चाहिए, नहीं तो वो खाना नहीं बनता है। और ये उगाने के वक्त दाना बने का तरीका भगवान ने ऐसा किया है कि एक ग्लूकोज से, ये पिष्ट पदार्थ से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रेशा को जुड़ा के बनाया है, ताकि जब हम वो खाए हमारा खून में ग्लूकोज धीरे धीरे से खून में मिलावट होने का एक अद्भुत व्यवस्था इस दाना में भगवान ने रचना किया है। मालूम हुआ? ये तो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। हमको हिंदी नहीं आते हैं, हम दक्षिण भारत देश वालों हैं, हिंदी नहीं सीखते हैं। पिछला 3 साल से हम हिंदी में बात करने को शुरू किया है, तो ये स्त्रीलिंग पुंगलिंग बहुत गड़बड़ होता है हमारा। तो आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। मातृभाषा में तो हो सकता है, लेकिन we all have done science, learned science in English, so कुछ शब्द हम हिंदी में नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ गड़बड़ हुआ हमारा हिंदी से, क्षमा कीजिए। आई होप आई डोंट मिसकम्युनिकेट द कंटेंट, बस इतना है। और ये धीरे धीरे खून में ग्लूकोज मिलावट करने का तरीका और किसी चीज में आपको नहीं मिलता, इंक्लूडिंग फल और सब्जियों में, क्योंकि उसमें रेशा का प्रमाण बहुत कम है और पानी का प्रमाण ज्यादा भर लिया है। और वो रेशा भी मिलेट्स का रेशा जैसा नहीं है, मैच्योर्ड फाइबर बोलते हैं यहाँ पे। और इसको और एक साइंटिफिक टर्म हम लगाना है, एरोमेटिक फाइबर भी बोलते हैं, लिग्नॉन्स बोलते हैं। वो फूलों में सब्जियों में नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फाइबर बोलते हैं, नॉन रेसिस्टेंट स्टार्च बोलते हैं। सो ये बहुत सारा साइंटिफिकली फर्क है। तो इसीलिए आप जब एक फल खाए, आपका खून में ग्लूकोज आ जाता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज ज्यादा भरा हुआ होता है। तो फ्रक्टोज ग्लूकोज बनाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए आपको फल खाने से आपका होम्योस्टैसिस इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। वैसा भी ज्यादा फल खाया तो आपको ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं करें। मिलेट से वैसा नहीं होता है, कितना भी खाओ आपका ग्लूकोज बैलेंस मेंटेन होता ही है। तो आपका समतुलन, खून का समतुलन 24/7 बचा के रखने वाला एक ही खाना है इस सारे विश्व में, वही है C4 ग्रासेस का ग्रेन। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? जब आपका खून का समतुलन बिगड़ जाता है, तब आपको बीपी होता है, ज्यादा शुगर आप खा रहा है, डायबिटीज होता है, थायराइड होता है। ये सब चीजों का मूल कारण आपका आहार में छुपा हुआ है। और पिछला 100 ईयर से ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हम ये खाना को अपनाया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड ग्रेट ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स। वो लोगों का दिया हुआ ये बीमारियों के कारण ये तज्ञ लोग, डॉक्टर्स नहीं बता रहा है आपको। आप गए, बीपी आ गया, ये टैबलेट ले लो। ये टैबलेट का कैरेक्टर क्या है? आपका खून को थिन करना है, थिनिंग, ब्लड थिनर्स बोलते हैं। तो इस लोगों को मालूम है कि आपका खून गाढ़ बन गया है, उसको थिन बनाने से ही आपका बीपी मेंटेन हो सकता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो हम 24/7 आपका खून को थिन करने का तरीका भगवान ने दिया है, और उस पर रिसर्च मत करना। हम फार्मास्यूटिकल
रिसर्च करते हैं, एक से एक बढ़कर टैबलेट हम पैदा करेंगे, आपको बेचते ही रहेंगे। जब तक बीपी आया तो डॉक्टर के पास गया, आप बोला सर कितनी देर लेना है? अरे पगला, जीवन भर लेना है ना। तो आप क्या समझ पड़े? ओ मेरे बीपी आ गया है, एक मोहर लगा दो, आई एम ए बीपी पेशेंट, जीवन भर बीपी पेशेंट। एंड दिस इज द साइंस फॉर यू। यही है साइंस। ले आना, लाखों नहीं करोड़ों को ले आना बीपी पेशेंट्स को। हम 3 हफ्ते एक खाना खिलाएंगे, करोड़ों में करोड़। We will remove all the BP tablets in a matter of 3 weeks if everyone follows strictly. बीच में जाके कॉफी पी लेना, बीच में जाके गुलाब जामुन खा लेना, ये सब मत करना है। Within 3 weeks, you can get rid of your BP tablet. Within 30 days, we were able to remove insulin for type 1 diabetic patient. क्यों? क्योंकि खून का असमतोलन को समतोलन बनाने में और रखने में ये अद्भुत दाना भगवान का बनाया हुआ रचनात्मक व्यवस्था से आपका खून का समतोलन को वापस लाके बिठाया है। दिस होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड, समतोलन, ग्लूकोज बैलेंस को हम बचाया तो एक बीमारी भी आपका अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकता है या कर सकती है। यही है हमारा द्वंद्व, करती है या करता है। कुछ भी बीमारी को आपकी शरीर की अंदर घुसा नहीं सकता है। Glucose balance is the reason why you will be healthy. तो आपका स्वास्थ्य कहां लिंक हुआ है? कहां लिंक हुआ है? आपका आहार। आहार तो आपको ग्लूकोज बैलेंस दे सकता है, दैट इज द रेगुलेशन। उसको निकालकर ये नेगेटिव ग्रेन्स हमें ये नाम दिया है, राइस और गेहूं, C3 ग्रासेस में ये रेशा नहीं है। रेशा जरा सा है, ऊपर का लेयर 0.2 ग्राम्स इन सफेद चावल, 1.2 ग्राम इन व्हीट, वो पॉलिश करने से निकल जाता है। सो 0 फाइबर। इसीलिए आप चावल का कोई भी चीज, वो इडली हो, डोसा हो, उपमा हो, व्हाटएवर, पुलाव, 24/7 पुलाव जोमेटो में ऑर्डर करके खा रहे हैं आप लोग। खाने से क्या होता है? 15-20 मिनट में आपका खून का अंदर मिनिमम ऑफ 35 to 40 grams ऑफ ग्लूकोज accumulates। उसको निभाने के लिए आपका यकृत, दैट इज लिवर, आपका पैंक्रियास, मेदुजीरा अंग और आपका प्लीह, स्प्लीन, ऑल दिस इंटरनल एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है, रोमेटिक फैक्टर बनाता है। फिर भी आप कॉफी, चाय, पकौड़ा, बंडा सब कुछ खा रहे हैं। हर चीज आप खाने का ग्लूकोज का इम्बैलेंस बढ़ाते ही जा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव 8% of kids in the last 15 years are getting type 1 diabetes. It's not you getting diabetes, that is the least of the worry, including your sperm and the ladies' ovaries are getting affected. And this is the problem for me. We are going to produce dysfunctional kids. वो हो रहा है। इटली में there are no kids born. जापान में they are building robots.
जर्मनी में एवरेज एज इज 51 because of this advanced scientific foods that they have eaten in the last 100 years. अभी हम भी उसके रास्ते में पकड़कर चल रहे हैं. All the diseases that they have talked have come. Only it has increased the number of tablets, number of hospitals, number of IVF centers, and this is displayed. इस सब चीजों को एक तज्ञ लोग बता रहे हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज. कैन यू बिलीव दिस नॉनसेंस? आपको सही तरह से सही ढंग से एक बच्चा बच्ची को पैदा करने का ताकत नहीं है और उसके ऊपर वो बोल रहा है ये सब एडवांस्ड टेक्निक्स. हंड्रेड्स ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस ऐसा 6 महीने में हम ठीक किया है. एक दवा का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आप खो गया है आपका रसोई घर में, लेकिन ढूंढ रहे हैं आप अस्पतालों में. आपको अस्पतालों में क्या मिल रहा है? टैबलेट्स मिल रहा है, एमआरआई स्कैन मिल रहा है, पेट स्कैन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है. आप तो खो गया है रसोई घर में. जाके रसोई घर में ढूंढ लेना. यहां कुछ भी नहीं मिलता है. आपको ये स्टॉप होता है ऊपर जाने के लिए. दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. क्योंकि मालूम है ये द स्टूपिड थिंग, द ओनर ऑफ दिस iPhone, Steve Jobs, had pancreatic cancer. His estimated worth $1 trillion or something when he died. He suffered for 8 months. He couldn't even drink water because of pancreatic cancer. There were more than 800 doctors attending to him. कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि they don't know what they were doing. Sorry to say this. खाने के लिए सही चीज चाहिए. जब सही खाना खाता है सब दवाओं का जरूरत मिट जाता है. तो आपका खाना सही है, दवाओं का जरूरत नहीं है. आपका खाना सही नहीं है, कोई दवा काम नहीं करती है. तो वो सही खाना क्या है? सही खाना वो होता है आपका खून का समतोलन बचाए. बिना ग्लूकोज कुछ भी नहीं होता है हमारा जीवन में. ग्लूकोज को हम भस्म करके शक्ति को निकालना है. वो शक्ति कहां से आया है? सूर्य भगवान ने ये पत्रहरित में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर एनर्जी जोड़ के पानी से ग्लूकोज बनाया है, दाना बनाया है. यही द्युति संश्लेषण क्रिया बोलते हैं. ये हमारा घास में C4 घास में अलग तरीका से बनता है, पानी का जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ और सब प्लांट्स में, all these plants are C3 plants. There are very few C4 plants on this planet. क्योंकि हर जगह पे उगाने वाला, उगा के लायक होने वाला C4 grasses में ही भगवान एक खाना छुपा है. Because he wants to feed every living thing on this planet. In the desert, near desert, even in desert, घास उगा सकते हैं, खा सकते. And that is the nature of food. तो पिछला 100 साल से just because they want to sell their bomb material converted to fertilizers and pesticides, they brought in this. And then associated sister industries have been cropped up, propped up. And all these fellows are experts. With all due respects, एक आदमी को भी एक बीमारी भी नहीं ठीक किया है ये लोग. And we can, on mass scale, remove all these diseases. जब आपका खाना सही बना. तो ये आपको समझना है कि
corporatization of food has created all these problems in the last 100. पहले नहीं खाते थे without knowing. अब तो हमको पता चल गया है. So when I was in America, first time I saw a girl, एक छोटी बच्ची 6 years का एज मासिक धर्म शुरू हुआ. जब से हम 1987 ये घटना हुई, हम ये आहार के बारे में सोचने लगे और परिशोधन करने को शुरू किया. जब हमको मालूम हुआ हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं वहाँ ये प्रपोजल किया. उस लोगों को ये सही नहीं लगा. सही लगा लेकिन उसके लिए सही नहीं है. You have to stop eating rice and wheat and sugar, means they cannot sell their. हमारे लिए ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स पेस्टिसाइड्स डालने के बाद आने वाला बीमारियां बहुत अलग है. इतना ज़्यादा बन गया है कि आप सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपकॉर्न, वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं ना आप सिनेमा हॉल में, उसके ऊपर फैला हुआ हर्बिसाइड्स का प्रमाण इतना बढ़ गया है, वो पानी में जा के दक्षिण ध्रुव में होने वाला पेंगुइन्स का खून में 80 पार्ट्स पर मिलियन दिख रहा है. वो पेंगुइन बर्ड्स, they cannot fly, they have cancer. So ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सब का सब नतीजा हमारा मानव जाति में भी कैंसर हम उगा रहे हैं. लेट मी यूज द वर्ड. तो ये सब बीमारियां एक तरह से हमारा खाना उत्पादन करने का तरीका से हम ले आ रहे हैं. और ये तज्ञ लोग ये बातों को हमसे छुपा के आपका बीमारियों को और कुछ दवाओं से इलाज करने का कोशिश करके हमको ये बोल रहे हैं ये एडवांस्ड है. मुझे तो सर गिर रहा है. ये क्या एडवांसमेंट होता है? एक तरफ पैदा करो रोगी, एक तरफ और केमिकल्स दे, एंड कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड इसको एडवांस साइंस बोल रहे हैं ये लोग. तो लाओ 100, 200, 300 लाख, 1000 लाख ये डायबिटीज पेशेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं. कितने दिन में? मैक्सिमम 3 months. अब सब लोग, you eat this food 3 months, you can throw away your BP tablets. Don't throw tomorrow, you have to get used to. धीरे धीरे. कुछ लोग 3 महीने ले सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 2 साल. It depends on how you are converting. The problem is आपको आदत पड़ गए है. ये राइस, वीट, चीनी, अंडा, दूध, ये सब ये केमिकल्स की वजह से आपका शरीर का एडिक्शंस बन गया है. तो आपको आदतों से बाहर आना ही एक प्रॉब्लम है. आपको मिलेट्स खाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये चीजों को छोड़ना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें ये सब मिलावट हो गया है. मालूम हो रहा है मैं बात क्या कर रहा हूं? वेरी सिंपल. तो हम सोच रहे हैं कि हमारा आहार सार्वभौमत्व को हर जगह पे कॉरपोरेशंस हैव छीन लिया है. हम ऐसा बात करते हैं फूड सिक्योरिटी. कहाँ है फूड सिक्योरिटी? ये बीज का हक भी एक कॉर्पोरेट वाला ने पेटेंट के नाम पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से राइट के नाम पर. इसका मतलब ये है हमारा किसानों के पास ये हक नहीं है बीज के लिए ये कॉर्पोरेट कंपनी वालों से हम पैसे लेके लाना.
उसके बाद गोडाउन्स भर भर के बोल रहे हैं ये फूड सिक्योरिटी है। ये क्या है फूड सिक्योरिटी? ये फूड खाने के बाद आपको कैंसर आ रहा है, बीपी आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है। 30% पीपल। हम अहमदाबाद गए थे, वो लोग बोले हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हैदराबाद गए थे, नहीं 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 नहीं, हम है कैपिटल। और कलकत्ता, हम मीठा ही खाते हैं, हम है कैपिटल। देन बेंगलुरु वाले ने बोला है आप सब लोग सेकंड प्लेस के लिए, क्योंकि इन द वर्ल्ड the highest amount of insulin is sold in Bangalore and Bangalore alone. There are more than 38 lakh people, diabetic patients, out of which 18 lakh people are using in one place 18 lakh people insulin on a daily basis. And we are paying $827 billion per year just to manage diabetes. And then every year preparing gangrene patients, retinopathy patients, neuropathy patients, minimum of 18% to 25%, dialysis patients, ये सब और ज्यादा कमाने का बीमारियों हम उत्पादन कर रहे हैं. This is all that has happened in the last 50 years. ये सब का सब हम हमारा रसोई घर में जाके सही खाना पका के खाने से 6 महीने से 1 साल में हमको रोग मुक्त देश को बना सकते हैं. आर वी रेडी? इतना सिंपल है. जब हम ये बात करते हैं, ये सब साइंटिस्ट, डू यू थिंक इट इज सो सिंपल? I said I have taken 45 minutes, है ना? Yeah, 40 minutes. 11:16 I started. Okay. So 40 minutes में आपको इतना समझाया. क्या समझ गया है ना आप लोग? आप कल जाके मिलेट्स खाने के शुरू करता है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको इतना अवेयरनेस हो गया है कि आपको शांति से ये मालूम होना है कि जब प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है आपको इतना ही करना है. 3 महीने आप लीव लेके घर में जाके ये खा के पका के बैठो, आपका बीमारी खत्म. वेरी सिंपल. सो नन ऑफ यू शुड बी स्कैर्ड. You can bring back your health into your body in a matter of 3 months, whatever may be the name of the disease. Whatever may be the name of the disease. I care 2 hoots about the disease name. I just care 2 hoots. उसके साथ साथ ये लोग चुप नहीं बैठते हैं. व्हाइट रेवोल्यूशन, सब जगह पे दूध को भर दिया है. ये दूध आर्टिफिशियल है. There are no cows in the world. Only in India we had some cows here and there, not everywhere. उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके IVF, हर गाय को IVF से स्पर्म इंड्यूस करके हर रोज lakhs and lakhs of this they have made so-called dairy industry. एंड आप सब लोग समझ रहे हैं दूध तो परिपूर्ण आहार है. कौन बोला है? हमारा विज्ञान किताबों में ये लोग लिखा हुआ है. असलियत में आपका अंदर पेट में 3 साल के अंदर आपका माँ का दूध जब स्तन में धीरे धीरे कम होता है, आपका पेट में भी द जीन दैट प्रोड्यूसेस द एंजाइम टू डाइजेस्ट द मिल्क गेट्स स्विच्ड ऑफ. आपका अंदर दूध को पचन करने का वो जीव रासायनिक का एंजाइम गेट्स स्विच्ड ऑफ. तो दूध आपका आहार नहीं है. वो गाय दूध क्यों देता है? क्यों देता है? आपको पनीर बना के पिज्जा बना के खाने के लिए? उसको बचने के लिए देता है. Just like you give milk to your
son or daughter, ladies, guy gives milk for the baby. And antar समझो, when the mother is feeding the baby, 3 हफ्ते के बाद जब बच्चा बच्ची उसका वोंट को स्तन को लगाता है, माँ को मालूम होता है हमारा बच्चा 3 हफ्ते में बड़ा हो गया है और आने वाला 3 हफ्ते में ज्यादा पौष्टिकांश मिलाना है, तो दूध का कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है। वैसा ही गाय भी करता है और 6 महीने में गाय का बछड़ा इतना होता है और आपका बच्चा बच्ची इतना ही होता है। इसका मतलब क्या है? द हार्मोन बैलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मदर्स मिल्क इन ह्यूमंस, मदर्स मिल्क इन गाय, मदर्स मिल्क इन लायन, मदर्स मिल्क इन टाइगर, मदर्स मिल्क इन रैबिट। कोई ना बात? तो आपका प्रॉब्लम क्या है? क्यों गाय का दूध लाके आपका बच्चा बच्चियों के मुंह में डाल रहा है और हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहा है? एंड 14 to 15 years is the age for human women to menstruate first time in their life. Now it's only the humans with all their great scientific acumen have brought down this number. Average age on this planet now the human girls are menstruating is 8 to 9. And no doctor in the world has asked a single question, why the hell this has happened? इतना हार्मोन इंबैलेंस बन गया है कि हम ये दूध पी के हमारा स्पर्म्स हैव स्टार्टेड एवेपोरेटिंग। इतना हुआ है कि इटालियंस आर नो मोर बॉर्न, जर्मनी's average age is 51, America's average is 41 despite immigrants pouring in every year. इसका मतलब ये है कि द खाना सही नहीं है। And there is no food scientist on this planet till today other than Dr. Khadar who is telling this. There is no research at all on these wonderful grains. There are more than 200, we have lost them, lost all of them. So इसीलिए हम सब कुछ, I was there in America for 12 years. I left everything and wanted to rejuvenate, bring back to the human consciousness the real food that we have lost due to corporatization of food. And it is our main problem, because to produce these so-called food materials, we have dug up the mountains, we have built dams, we have been making tons and tons of chemicals, pouring it onto the Mother Earth and contaminated the water bodies and spoiled the rivers. Everything that you can imagine we have done just to produce food in the last 50 years. And all these environmentalists never ever talk about this. They are telling we have to use green energy, solar energy, wind energy. All this bakwas is only 3 billion carbon dioxide footprint. And all this food production, 92 billion pigs are killed every year on this planet for food. And if I don't believe in eating pigs, I will eat cows. If I don't believe in eating cows, I will eat goats. If I don't believe in eating goats, I will eat rats. I will eat whatever. Put together, we have evaporated the aquifers of California, Everglades of Florida, and Kaveri, Ganga Nadi is also going to be evaporated soon. We have floods everywhere because there are no forests to hold the water. Kaveri is now annual river. It's not perennial. After 4 months, it disappears. Because there are no big trees and there is no grass. C4 grass is the main reason why rivers are formed. C4 grass is the main reason the top 4-inch soil is preserved and replenished. C4 grass are the main reasons which protects from the sun, from the wind, from the rain, from the floods.
So C4 grass is eliminated because you don't think that is needed. 48% of agricultural land is filled with rice and wheat fields on this planet, which is actually absolutely unnatural. And all these experts are not talking about it. And that is the reason we have diseases. That is the reason we have multi-specialty hospitals. That is the reason why we have our young kids mentally retarded. And how can we change that? We can change in a matter of 3 years. If all of us decide to eat millets. And then all these, oh, there are no millets. For some reason, they have disappeared. They didn't disappear for some reason. It is planned very well in the corporate boardrooms. Are we ready to take back our natural foods into our kitchens? When that happens, all the farmers who were growing food are told this is not food, and they stopped growing because they never get any money. All the money is diverted in the name of subsidies to the fertilizer companies. In the name of farmers, Indian government pays 2.9 lakh crores every year. Not to the farmers, to the companies. This is what is the reality. And it is to the credit of present government that they have recognized the millets or the food. I have been shouting at top of my voice, millets are the food. I mean, that is the only food. It is the super food. The rahenge. In between, human race may disappear. They will come back. And we will disappear if we do not start eating millets soon. We only have 5 to 10 years. If you don't change your food, you're gone. Not by disasters, by within, because you are so sick that you cannot produce kids. Imagine next 5 generations, the kids are dysfunctional, 40%. What do you get? The nations will disappear. In fact, all Europe, many of the countries are calling, please come and become our citizens. Do you know that? Luckily, we have not followed these fellows seriously till now, but now it has started. So we are also in the same path. Because they are driving our wants and needs. Pizza, 800 rupees we are ready to pay. When I say drink millet ambali, which is almost free. 1 kilo, soak for 8 hours and boil with 50 liters of water. You will get porridge. And if you tie it up in a mud pot, keep for 8 more hours, it becomes fermented porridge. The microbes come in. And without microbes, you will not have health because our guts are filled with microbes. They are the ones which work with your living cells. आपका जीवकोश से साथ साथ काम करने का एक ही ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, गट माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रोबायोम बोलते हैं, उसको हर रोज आप भरती रहे, keep replenishing, you will have no diseases, क्योंकि गट माइक्रोब्स आपका जीवकोश से झुल मिलाकर काम करके आपको कहां, कब, कितना प्रमाण में क्या क्या चीज चाहिए, वो सबका इंतजाम करने में व्यवस्थित किया है भगवान. हर जगह पे ये माइक्रोब्स को हर जानवर में भर दिया है. फिलहाल क्या हो गया है कि हम ये आधुनिक आहार चीजों को खा खा के ये माइक्रोब्स को हम मार रहे हैं. स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड. आपको मालूम हुआ होगा आजकल ये फर्टिलाइजर की वजह से हमारा मिट्टी
बंजर हो रहा है, क्योंकि पानी भर रहा है, ये डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर 4-5 इंच के अंदर होने वाला माइक्रोब्स और सूक्ष्म worms, all that we are killing, and it is that which is the health of the soil. वैसा ही वैसा हमारा पेट में भी 2.2 किलोस माइक्रोब्स होना चाहिए. अभी तो इट वाज फाउंड इट इज ओनली 1.1. इसीलिए आपको विटामिन B12 कम होता है और बहुत सारा जीव रासायनिक चीज पदार्थ कम होने के बाद ये लोग डिक्लेयर करते हैं ये डेफिशिएंट है, हमारे पास टैबलेट है, हमारे पास इंजेक्शन है, आ जाओ, हर रोज आके आके हम इंजेक्शन देते हैं. यू सी द बिजनेस. तो आपको गट माइक्रोब्स चाहिए हर रोज, और नो प्रॉब्लम, वी विल मेक दैट प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक. बकवास लोग अगेन पॉलीमर घुमा के उसके ऊपर, एंड दैट पॉलीमर अलोन कैन कॉज कैंसर फॉर यू. ये कैप्सूल्स बना बना के दे रहे हैं, हर रोज कैप्सूल्स लेना है. मोस्ट अनसाइंटिफिक थिंग दैट दे डू इन द नेम ऑफ साइंस. इतना सिंपल है दैट 3 weeks you do whatever you want, other things. You take अंबली, तो आप 1000 लोग हैं, you only need 50 kilos of millet. बनाओ, शाम में 6 घंटे को हर आदमी मैंडेटरी 250 ml पिला लो. 3 हफ्ते में आपको इतना फर्क दिखता है, whatever may be your problems, IBS, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेंटोप्रोजल हर रोज लेना है, और सबका बकवास प्रॉब्लम्स विल गायब हो जाता है. And you may have all adat, I have to eat my egg, I have to eat my pulao. You keep doing that, but slowly and steadily when you start eating millets, उसका जरूरत कम होती जाती है. So you don't need to be afraid, oh once I start this I have to leave. You will leave it slowly and steady. आपको इतना ही करना है शुरू करने में. मिलेट्स खाने के लिए आप अच्छी तरह भिगोना है मिलेट्स को. क्यों भिगोना है? उसका जीनोमिक कंटेंट में भगवान रेशा भरा हुआ है. कुटकी फॉक्सटेल मिलेट में 8% भरा हुआ है, कोडो चावल में 9%, ब्राउन टॉप हरा कुटकी में 12.5%. ऐसा हर दाना में अलग अलग रेशा का प्रमाण है, और रेशा भी अलग अलग है, नेचर अलग अलग है. कोडो चावल का रेशा आपका खून और बोन मैरो मूल मज्ज को शुद्ध करता है. ये बिल्ड करने का, और बिल्ड करने में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स पैदा होता है, शक्ति निकालने में कुछ शक्ति बचा के वो फ्री रेडिकल्स बन जाता है, वो टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है. उसको आपका शरीर से आज हम नहीं निकाला, आपको बीमारी पैदा होता है. तो वो काम भी हमारा मिलेट्स में ये भिगोया हुआ रेशा में भगवान इंतजाम किया है. वो टॉक्सिक मटेरियल्स को आज झाड़ू जैसा निकाल के बाहर डालने का तरीका भी हमारा मिलेट्स के आहार में भगवान छुपाया है. मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूं? सो आजकल मॉडर्न फूड में ये 0. यू टेक एनी फूड यू टेक 0. सब्जी में, फल में 5% है. That's why when you stop all that, all these dietitians, you stop all that, eat only fruits, eat only this, you will feel better. But if you continue to eat only and fruits and vegetables, after 6 months you will fall sick again. क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है और सब कुछ नहीं है. आपको सब कुछ चाहिए, विटामिन B12, thiols, everything Bhagavan has loaded. Can you play the book? I have taken now another 2 minutes, it will be 1 hour. And we have worked out another 3 minutes, I'll finish my talk. Okay? ये है
मेरा फॉलोअर्स उसको मेरा नाम दिया है डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल, मैं उसको सिरी जीवन नाम दिया है। सिरी, ये दाना को हम सिरिधान्य नाम दिया है। मेरा सौभाग्य यही है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी उसको श्री अन्न प्रोजेक्ट का नाम दिया है। वो नाम यहाँ से शुरू हुआ है, सिरिधान्य, सिरी जीवन। ओके, जस्ट कीप फ्लिपिंग द पेजेस। आपके लिए ये फ्री है, यू कैन डाउनलोड। ये हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है, सब है। I have it. You can just go to Google and download everything free. Just run through. This is little bit information about me. Please go ahead. There is a table which comes from there. That's 1 minute. It will be unfair on my part. Just 1 minute. Down. One more. No, this will come back. This is my daughter, Dr. Sarala. She is a real doctor. I am not a real doctor. I am a doctorate. She is a homeopathy doctor, BHMS, gold medalist. She has been treating people, and also she gives 3-day lectures, 5-day lectures, programs morning from sunrise to evening till you sleep. She is training almost many women, many places. As we speak, she is giving a 3-day session. Yeah, please, down, one more page below. No, not, okay, I want to show my wife. Yeah, go ahead, please. Fast. Oh, Venakke, please, behind. One more page down. There she is. She is Usha. I met her in Indian Institute of Science. She was also doing PhD. And then, of course, we went abroad and all that. So that's my daughter. And my daughter is now married to Kushal. He was in Dubai. He is an environmental engineer, MTech from Nagpur. He also left everything, and both have come, and then they are doing the bull-driven oils and other things. Please go ahead. And now we go to the science. Yeah. We have been working for the last 25 years. So if I don't mention the members that we have generated all the content. Please. Yeah. See, this is the fiber content and the carbohydrate and all the vitamins that you need for your body. Everything that human body needs is present in these 5 grains. And if you add another 5 grains, ragi, bajra, jowar, maika, makai, ये सब खुल मिला के 10 दाना है अभी हमारा देश में, बीज संपन्न है. We have distributed to almost every nook and corner of India now. उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, सब गुजरात में, राजस्थान में ये 5 दाना को श्रीधान्य बोलते हैं. ये न्यूट्रल ग्रेन्स है. ये 10 दाना खुल मिला के we have real food security and food sovereignty. Each and every place we can grow food and feed people. Not 7 billion, 70 billion people. Jab rice and wheat are not growing, the only food that can save the planet and humans, not only humans, all the living things on this planet are millets. So we have had, please go up. Just scroll through. Yeah, go ahead. That's my daughter, and yeah, just go ahead. Go ahead. We have made list of 108 diseased parameters. Go ahead. And this is about each grain. Kutki, Kangni, Sawa, Hara Sawa, Kodo. Please flip through. And these are, and there are many more aspects associated with food, like Surya Bhagavan ka Namaskar, because there are 12 frequencies. Each frequency starts your each endocrine system. So that Surya Namaskar is very important for health, because vitamin D cannot be synthesized or done by anything else, including millets cannot give you vitamin D.
unless you go and sit in the sun. Okay, so all that information is given. Please go ahead. Yeah, just run through. Flip through, please. Yeah, here is the list we have made, do's and don'ts. And if you read the list, this is all that we are eating. All that we should not be eating, we are eating, and the alternatives which are native have been recognized and worked through, and we have found wonderful results for all the diseases. And the list of the diseases, please go through. Yeah, flip through. Please go ahead. Go ahead. Please go ahead. Go ahead, please go ahead. Yeah, this is what I talked about, Ambali. This is the most important way of eating. And it can be done on mass scale. Thousands and thousands of people can be fed with almost no charge. I mean, if you compare, the money is almost zero. You need only water and little bit of grain. You make the fermented porridge, your gut microbes are replenished, and the doctor within 24/7, he will work for you. And you will start healing all the diseases. So this is the must. So if you take these 21 days, your body gets primed. Then you can start changing your life. Go ahead. Go ahead, please. Just go ahead. Yeah, just flip through. And here starts the list of all the diseases: dialysis, gout, diabetes, thyroid problem, PCOD, and hormone imbalance. So for type 1 diabetes, you need to use the hormone imbalance protocol. What are the decoctions to take? What are the grains to use? And how many days? All that is scientifically, experimentally worked out, and this list is made. Like that, 108 diseases are there. You can just flip through, sir, very fast. Flip through, please. And including cancer, blood cancer, brain tumor, all those things are worked out. So what all you need is the information and this book and the 5 grains. Luckily in Bangalore now, everywhere it is available. No issues. South India, we have now toured almost more than 3,000 to 4,000 places. And we have handed over the seeds, and many places, lot of villagers are growing. And because we are creating demand, the farmers, barren land farmers are making money. In fact, I went to Gadag last month, Kanavi, a small place, village. Each farmer is making 10 lakh rupees per year by selling the millets. In fact, we have created FPOs, and huge societies are formed. And luckily, 2023 was declared due to the efforts of Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji. And now he started using the word millets. So everyone now wants to know what they are. So I am thankful to Narendra Modi ji, because he is the first leader in the world who said, eat something else other than rice and wheat and sugar. So, so happy. And meanwhile, the oils that we are using is actually 30% of the reason why we have lot more diseases. It will take another half an hour if I go into that, because I've been working for 35 years. So it's also difficult to put everything in 1 hour. But this is only an introductory lecture, and we will be pleased to come back and spend more time with you people. And in fact, if the female counterparts, we can train them separately also. All these things we can plan if you all wish to do. And we produce the bull-driven oils. By giving the bull-driven oils, we have been able to heal mentally retarded kids, mentally schizophrenic cases, people who have mental disturbances, all that, because the nerve centers require cleaning, which can be done only by the real oils.
not the refined oils that you are all using in this plastic pouches, and that's absolutely not the right way. So all the information is given. Please run through. And different decoctions, different names in different languages. So the only thing when we change to millets, we can only make the planet a better place to live. Nothing else can do the job, because environmentally the sound practices, and if you want to save energy, it's the millets, because once you grow millets, make C4 grasses appear on this planet, the energy loss is completely curtailed. So the planet becomes evergreen for future to come. So the real evergreen revolution is humans switching to millets. Thank you very much. I don't want to take more time because schedules are schedules, and at your order, we'll come back and serve you. And it is my pleasure, and I feel privileged you have asked me to come and spend time with you. I really, really enjoy serving people, because you are the ones who are working relentlessly to keep our country the way it is. I am. Actually, you don't understand my happiness that I have come, and CRPF is something which I have a lot of respect. You work under such difficult conditions, and of course, politically, all these bakwas things are happening. Don't mistake me for saying this. With all that difficulties, you are maintaining the peace of the country. I mean, I don't think any other country is as peaceful as our India is, with despite all the disturbances. So I'm so glad, and my pranams to your feet. Thank you. धन्यवाद महोदय। आपने इतने गहन शोध को इतने कम समय में और इतने असरदार तरीके से इतनी सरल भाषा में बताया है कि निश्चित रूप से जो ऑनलाइन भी हमारे साथ बटालियनों से जुड़े हुए साथी हैं, बहुत इससे लाभान्वित हुए होंगे। और अब समय है जब क्वेश्चन आंसर सेशन है ये। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे मुख्य अतिथि वक्ता से पूछ सकते हैं, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, ताकि वो आपको इसका जवाब दें। और मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगा विनय सर से भी कि यदि ऑनलाइन किसी का प्रश्न हो तो तैयार रखें। अभी यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, इनमें से किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया अपना हाथ उठाएं और प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम CTGD महादेवा भी है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन है सर, जो मिलेट्स है उसको मिक्स करके खाता है, जैसे गेहूं का साथ बाजरा को मिक्स करके रोटी बना के खाना है, और अम्बली है उसका चीनी मिला के खाना, ये सही है गलत है सर? मिक्स करके खाने का तरीका सही नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। स्पेशली गेहूं से कुछ भी नहीं खाना है। तो आजकल तो गेहूं 98 kilos, and we have only now got in the world 2 kilos of millets. That's the ratio of millets to गेहूं चावल है। तो आपको practically not possible to change overnight to millets, but हमारा देश में, दक्षिण भारत देश में तो सब कुछ मिल रहा है। तो आपको मिलेट्स एक एक हर रोज या 2 दिन खाना है। मिलेट्स को भी नहीं मिक्स करना है, क्योंकि हर मिलेट का ताकत और कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। सो आप कोडो चावल खा लिया, आपका खून शुद्ध होता है। आप कुटकी फॉक्सटेल मिलेट खा लिया, आपका श्वासकोश शुद्ध होता है। सब कुछ मिला के खा लिया, एक अंग भी सही ढंग से नहीं शुद्ध होता है।
इसीलिए अलग अलग 2 दिन या 3 दिन और एक एक दिन बदल बदल कर खाने से आपको सही स्वास्थ्य मिलता है। और गेहूं और चावल आपको छोड़ने का हुआ तो कल से ही आपको स्वास्थ्य वापस आने को शुरू करता है। So if you just leave rice and wheat in your kitchen and outside also, if you do not allow that to go into your tummy, you will start becoming healthy from tomorrow itself. Don't mix rice and wheat with anything. They are not food for your gut. आजकल मार्केट में जो जिन्नी पड़ रहा है, हाँ वो तो सही नहीं है। वो तो सबसे सही मैं बोलूं क्या होता है, शाम में वो फ्लोर मिल के बाद जाए तो सब कुछ कुटकी का, इसका उसका सब कुछ कुल मिला के 1 टन पड़ा हुआ होता है, उसको भी वो बेच के पैसे बनाना चाहते हैं, बस इतना ही। सो इट्स लाइक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, इट्स अ मल्टी मिक्स, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर अनसाइंटिफिक। और एक क्वेश्चन है सर, जे अर्ली मॉर्निंग में हम लोग बोलते हैं पेस्ट यूज करते हैं, आपने भी 7 साल पहले बताया था पेस्ट के जगह में चारकोल को यूज करो और नमक को यूज करो। ऑफ कोर्स आई डोंट यूज द पेस्ट, हम तो नीम का और चारकोल यूज करते हैं, और हम ये पानी भी नहीं छूते हैं। आई नेवर टच दिस। हम तो हमारा पानी ताम्र का बाटल या ताम्र फलक लगाने वाला मिट्टी का बर्तन से ही पीते हैं, क्योंकि दिस क्लीन्स इवन द प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स। सो ये तो क्रिमिनल है। ह्यूमन रेस यूजिंग water in the plastic bottle, according to me, is criminal. You should all be put in jail. Actually, by now, we should have made a law. Whoever uses water bottle for water should be put in jail, according to me. और एक क्वेश्चन है सर, जैसे आज जितना लाखों लीटर से डेली बिकता है मिल्क, अगर किसी ने घर में अगर मिल्क लेकर के बच्चे को नहीं पिलाया, ये कैसा आदमी यार, बच्चे को दूध भी नहीं पिलाता है। हम बोलते हैं कोकोनट दूध पिलाओ, वो तो कोई नहीं सुनते सर इसका बात। Yes, coconut milk and coconut water are life same. In fact, अभी तो गर्मी आ रहा है, आप एक आधा कोकोनट को मिक्सी में डालकर 2 लीटर पानी दूध निकालना, पतला दूध, और हर आदमी को 100 ml पिलाना हर रोज सुबह उठने के बाद। You can go into 50 degrees centigrade गर्मी में जाके वापस विदाउट गेटिंग टायर्ड। इतना अद्भुत है एक कोकोनट का दूध। एंड कोकोनट दूध इज द मोस्ट इम्यून गिविंग मिल्क, एंड काउस मिल्क और वट एवर मिल्क इज द मोस्ट ऑटो इम्यून डिजीजेस आर क्रिएटेड बाय। आपको कन्नड़ा मालूम है? तो एक प्रवचन बोलता हूँ। हाँ सर। नदी उदकव नदी कर्पित माडी, ಮರಹೂವನ್ನ ಮರಗೇರಿಸಿ ತಾಯಿನ ಮರುಗಿಸಿ ಕರುವನ ಕಟ್ಟಿ ಮೊಲವಾಳನ್ನುಣಬೇಡವೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಲವರ ಬಾಯಿ ಟೊನದೇ ಹೋಯಿತು। ये प्रवचन बोला हुआ है बसवन्ना से। वो बोल रहा है नदी का पानी को नदी में रहने दो, फ्लावर ऑफ द प्लांट लेट इट बी देयर, और वी आर टेकिंग अवे द मिल्क ऑफ द बेबी, मेकिंग द काउ नॉट नोन। ये बुरा है क्योंकि वो दूध पीने वालों को माउथ में हलवर बाई टोनदे हुई तो अल्सर्स आ जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑल दिस आर ड्यू टू विटामिन B12 deficiency. Milk kills the microbes in your tummy. Milk kills because of the hormones, because of the antibiotics and all that. This is told by Basavanna in the year 11th century. So हम तो दूध पी रहे हैं क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री हैज टेकन ओवर। दूध मत पीना। और एक बात है सर, जिसे बच्चे को दूध पिलाते हैं उसमें जैसे 6 साल और 7 साल में उनका मास शुरू हो जाता है। ये हम लोग इधर भी देख रहे हैं, उनको बताने के बाद जो जो चीज है वो कोई नहीं सुनता है। ये सब मत करो बोलने से भी, क्योंकि डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स आर नॉट टेलिंग, they are the ones who have to tell. No, we are divided society.
there is expert for that, there is expert for this. कुछ हुआ तो गवर्नमेंट भी एक एक्सपर्ट कमिटी डालता है, whatever suggestions, that's the way the businesses are run, है ना? So experts को ये बात के ऊपर चर्चा करना है. That's the way it can change. Right now the system is like that. वही हम बोल रहे हैं, हर जगह पे हम ये बात ही करते हैं कि एक्सपर्ट्स को ये बात लोगों को पहुंचाना है, अवेयरनेस करना है. So it is the doctors who have to say what is right, what is wrong. सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताता हूँ सर. आप अकेला एक 7 साल 8 साल से पहले हम लोग आपका ये देखते था सरला जीवी, एक टीवी प्रोग्राम है सर, उसमें हम लोग आपका टीके लेविट के पास भी आता था, घूमता था उधर, सब मिलने में आते थे हम लोग. फिर भी आप अकेला इतना दूर तक पहुंचा सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बताता हूँ सर. थैंक यू. मेरा कर्ज है ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला पीढ़ियों को हम सही रास्ता दिखाना है. किसी और के मन में कोई जिज्ञासा? Change, sir. Sir, I'm from Karnataka, Belgaum district, sir. Sir, my question is, sir, मैं थोड़ा सा कन्नड़ में बात करेंगे तो चलेगा सर? कन्नड़ में बात करेगा तो ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬರಗ ನವನಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ರು ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ತರದ ಬರಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. इसका सवाल है कि ये कुटकी सब कुछ कहाँ मिलता है और राइट दाना मिलता है ही नहीं. आपको फर्टिलाइजर यूज किया हुआ जगह पे भी ये दाना को उगाने से आपको फर्टिलाइजर्स नहीं लगता है, क्योंकि ये दाना उगाने के वक्त हमको पानी का जरूरत नहीं है, तो पानी डालने से ही ये सब खींच लेता है ना. तो पानी का जरूरत नहीं, ये नहीं खींचता है. इवन इफ देयर इज वाटर, उसको पानी नहीं चाहिए, वो नहीं लेता है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल्स गोइंग इनटू दिस ग्रेन. That is first point. उसके साथ साथ अभी क्या क्या मिल रहा है आपको, जरा पॉलिश कर देते हैं लोग, नो प्रॉब्लम. अंदर भी रेशा भरा हुआ है, ऊपर का रेशा बहुत अच्छा है मुझे मालूम है, लेकिन कुछ भी मिल रहा है वो तो 1000 टाइम, 1000 ज्यादा से गुना आपको अच्छा है ये चावल और गेहूं से. सो प्लीज ईट वट एवर मिलेट्स यू गेट, ईट. आपको सही चाहिए तो मैसूर को आना, हमारे घर के पास एक अद्भुत शॉप है, वहाँ हम मिशन नहीं यूज करते हैं. हम महिलाओं को ट्रेनिंग किया है, घर में बैठकर और हर रोज 10-15 किलो छिलका निकाल के हमको देते हैं, वो बिच्चू मेथड कहते हैं. उससे हम कैंसर लोगों को भी सही ढंग से 6 महीने में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भरा हुआ रेशा बहुत अद्भुत है, बहुत औषधि गुण तत्व है. सो ये सब छुपा हुआ है, हम धीरे धीरे लोगों के पास ये सब इंफॉर्मेशन को लेना है. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन सर. थैंक यू, हैव अ गुड डे. ऑनलाइन जुड़े हुए साथियों से यदि कोई प्रश्न हो तो ले लें सर. हमारे इस प्रोग्राम में जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अपना हाथ उठा के. एक 151 बटालियन सीआरपीएफ से प्रश्न है सर. वो लोग. Good morning, sir. Good morning. Namaste. Sir, I am Shilpa from 88 Battalion, New Delhi. बोलिए.
Sir, can I ask a question, sir? Please go ahead. Sir, you had mentioned a book in your lecture, sir. Can we have the PDF. Yes, yes, yes. some place address from where we can get that book? One question, sir. Second, is there a way to connect with you, sir, through mobile or some social media, so that we can talk to you freely and individually? No, no. I cannot attend on phone and social media. You can talk to me freely, but no charge. You have to come to Mysuru. Okay. Sir, Because social media और सब कुछ बहुत time लेते हैं. And if I say yes on mobile, then already my mobile is. Mobile is not this thing. Like if you have some informative channel like Instagram or Facebook where we can. वो तो बहुत सारा पड़े हुए हैं. Like Dr. Khader Lifestyle Facebook page में. Okay. हजारों videos, questions, answers पड़े हुए. Right, sir. And Millet Magic Dr. Sarala एक YouTube channel है. बहुत सारा information है. And most important, how to cook different dishes. Videos बनाया हुआ है. So you can cook dokla, you can cook idli, you can cook dosa, you can make noodles. सब कुछ, सबका सब. And sir, ये जो there are certain varieties in the like local chakkis. We have certain varieties of millets का मिश्रित अनाज का sir आटा and all flour. So how good it is, sir, actually? No, ये आटा flour आप आज के आज बना के खाना बहुत जरूरी है. You don't make flour and then keep it for 15 days, 20 days like this Amazon fellows. That's not the right way. So you buy grains and make atta in your house or go to your nearby flour mill and make atta and come and finish it. Don't keep it for long because atta should be kept. Atta should not be kept. वो तो ताजा ताजा बना के आप फुल्का बनाने से ही अच्छा होता है. Even if you keep for 3 days and make pulpa, it will not be that good compared to 3 days ago. Sir, any ratio combinations of millets and the ratios sir कहीं पर है sir? No, don't mix. Each अलग-अलग बना के खाना. Right, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मैं कमांडेंट 151. बोलिए सर. सर मैं जानना चाह रहा था जैसे हमारा जो यूनिट है काफी गर्म इलाके में काम कर रहा है, तो जैसा कि हम कई बार काफी चीजों के बारे में सुनते हैं कि जैसे कुछ की तासीर गर्म होती है, जैसे बाजरा है, बाजरा गर्म होता है, तो अगर हम गर्म इलाके के अंदर बाजरे का इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में लोगों की गर्मी होगी और जैसे कई बार दिक्कतें परेशानियां आती हैं, तो उस चीज से हम किस तरीके से इन अनाजों में फर्क कर सकते हैं कि कौन सा गर्म तासीर का है और कौन सा ठंडी तासीर का है, किसको गर्म इलाके में खा सकते हैं, किसको ठंडे में? ये गलत समझौता है कि जब आप मिलेट्स का अंबली, खमीर, बासी बोलते हैं, उत्तर भारत देश में ये बास बॉटल है ना, बास बैम्बू, वो बम्बू बॉटल में ये पॉरिज बना के रखते थे लोग, इसीलिए उसको बासी बोलते हैं. ये बासी में माइक्रोब्स होता है. जब आप पेट में भर लेता है 21 डेज, उसके बाद आप कुछ भी मिलेट खाओ, आपको गर्मी नहीं होता है, सर्दी नहीं होता है. सो इंटरनल इम्यूनिटी का इश्यू है, ये मिलेट का बात नहीं है. तो आजकल आप ये सब खा के आपके अंदर ये इंटरनल इम्यूनिटी कम होने की वजह से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब लोग मिलेट्स को वैसा ही वैसा कुकर में या वैसा फ्लोर बना के इमीडिएटली खा रहे हैं. वो गलत तरीका है क्योंकि रेशा भरा हुआ है इसमें. आपको भिगोना बहुत जरूरी है. बाजरा का रोटी बनाने के लिए आप फ्लोर बनाने के बाद आटा गूंद के 2 घंटे रख के रोटी बना के खाना है. ये सही तरीका है. आप ये नहीं करते हैं तो आपको वो जलीकरण नहीं हुआ, नॉट हाइड्रेटेड फाइबर इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम. तो आपको भिगोया हुआ फाइबर के साथ कोई मिलेट को खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो सोकिंग
हाइड्रेटिंग द फाइबर बिफोर यू कुक बहुत जरूरी और मैंडेटरी स्टेप है। ये मशीन्स में और प्रोसेस्ड फूड्स में नहीं होता है। आपको आपका रसोई घर में आपका हाथ से बनाना है। तो पहला 6 महीने आप आपकी हाथ से भिगो भिगो के खाने के बाद आपका अंदर पेट में माइक्रोब्स बैठ जाता है। उसके बाद आपको इधर उधर कुछ गलत हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पहले 6 महीने आपको आपका रसोई घर में खुद हाथों से पका के खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना है। आप तो अभी वीक है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने में ये आदतें बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैन सर, मैं 21 बटालियन हाइड्रेट में क्या चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? चाय क्या बात? हाइड्रेट में चाय पीना चाहिए या नहीं? अपना प्रश्न एक बार फिर से पूछ लें। 21 बटालियन सीआरपीएफ हाइड्रेट में चाय पीना चाहिए या क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। हाँ, थायराइड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड के लिए ये निर्नाल ग्रंथि है, उसके ऊपर बैठा हुआ कल्मशों को निकालने के लिए आपको सही तेल चाहिए। वो नारियल का तेल और नाइजर सीड का तेल, तिल का तेल 1-1 हफ्ते पीने से आपको जरूर ये थायराइड प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए लिटिल मिलेट का अंबली पहले 3 हफ्ते 2 बार 3 बार पीने से आपको जल्दी थायराइड टैबलेट को आप फेंक सकते हैं। हजारों लोग नहीं, लाखों लोग थायराइड से मुक्त हुआ है। वहाँ प्रोटोकॉल में 7, 8, 9 आई थिंक इन द प्रोटोकॉल बुक में हार्मोन इम्बैलेंस थायराइड उसका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। उसके साथ साथ कुछ पत्तों का काढ़ा भी पीना है, वो सबका इंफॉर्मेशन किताब में हुआ है। एंड I already given you, I'll give you different languages. Please share with all your groups. वैसा ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में है वो, वैसा ही पड़ा हुआ है गूगल लिंक में। मराठी में, गुजराती में, हिंदी में सब कुछ है। Good afternoon, sir. Sir, this is Rishi Raj Sharma, Assistant Commandant, Sierra Northeast Zone. Go ahead, sir. Sir, thank you for the insightful session, sir. Sir, but I have some doubts, sir. Like Yes. Food habits to a great extent are like decided by the region we have been born and brought up. Like you have given the example of coconut water vis-a-vis milk. So in the region I have been brought up, like in Western UP, Rajasthan or Haryana, the milk is in our staple diet, but coconut water, like we don't have coconut at all. Coconut is like a luxury. So how can we like replace milk with coconut that costs more than 100 a piece? Yeah, you have बाजरा। बाजरा होता है ना आपके पास? सर बाजरा होता है सर। हाँ, बाजरा से दूध निकाल लीजिए, वो कोकोनट दूध से भी अच्छा है। सर और आप गेहूं खा रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गेहूं खा रहे हैं आप लोग, ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप क्यों खा रहे हैं गेहूं। सर आपके पास गेहूं नहीं उगा सकते हैं और क्यों खा रहे हैं? बाजरा उगा सकते हैं, रागी उगा सकते हैं, कुटकी उगा सकते हैं। ये सब आपका पूर्वजों ने हजारों साल उगा के खा लिया है और दूध नहीं पिया। वो लोग कुटकी का दूध, सामा का दूध, कोडो चावल का दूध इतना अच्छा है, आप खून भी क्लीन कर सकते हैं। सो हमारे लिए भगवान हर जगह पे दूध दिया है बच्चों के लिए। बाजरा दूध तो ये लैक्टेटिंग मदर्स को हर जगह पे आज भी पिला लीजिए, इतना अच्छा बनता है कि आपका बच्चियों डॉक्टर के पास जरूरत नहीं पड़ता है।
That's how I have grown my baby. I give bajra ka milk. Even now, if you have cold cough, bajra ka milk, hot milk, पिला लीजिए, or coconut milk if you have coconut milk. So हर जगह पे दूध आज मौजूद है, लेकिन हम उसको दूध नहीं मान रहे हैं, बस इतना ही. Sir, one more question, sir. Sir, you have given your insight on wheat, paddy, and millet. Sir, what about pulses, sir? Sir, they are beneficial or not? वो तो और एक घंटा लग जाएगा. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन रेवोल्यूशन, अभी पिंक रेवोल्यूशन कर रहे हैं. संक्षिप्त में हम बता देंगे. 1 एकड़ जगह पे आप पल्सेस उगा सकते हैं, नॉट मोर देन 2 क्विंटल्स. दिस इज नेचुरल मेथड. और 1 एकड़ बैरन लैंड में मिलेट्स या सीरियल्स उगा सकते हैं 8 से 10 क्विंटल. सो ये भगवान का दिया रेशियो है, 5:1. दैट मीन्स आपका खाना में इफ यू ईट 10 grams of food, 2 grams of protein चाहिए. So if you eat 100 grams, 20 grams of pulses. And pulse में 60% कार्बोहाइड्रेट है, 20% प्रोटीन है. So आपको प्रोटीन का जरूरत है अराउंड 12 grams पर. That's the ratio given by God. अभी तो ये लोग पिंक रेवोल्यूशन के नाम पर आपको प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, सोयाबीन खाओ, अंडा खाओ, पुंडा खाओ. योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज kaput and you are increasing CKD patients, डायलिसिस पेशेंट्स को हम उगा रहे हैं. सो प्रोटीन का जरूरत इतना नहीं है कि ये लोग बता रहे हैं. आपका मुंह में एक प्रोटीएस भी नहीं है. There is not even a single peptidase, scientifically, absolutely not there. Oh, after celiac reason only we have all these peptidases coming into picture. प्रोटीन चाहिए हमें इसीलिए कि आप डीएनए रिप्लेनिश करने के वक्त प्यूरिन पिरिमिडिन्स को बनाए, उत्पादन करें. एंड दैट मेटाबॉलिज्म लेफ्ट आउट नाइट्रोजन को ओनली किडनी एंड लिवर कैन मैनेज. तो ज्यादा हुआ तो आपको किडनी डैमेज, लिवर डैमेज होता है. एंड दैट्स व्हाट वी आर फेसिंग इन ऑल वेस्टर्न, wherever people eat more meat. The meat metabolism, nitrogen metabolism is kaput, and dialysis, kidney patients are more wherever meat. In fact, American, they don't have control over their urine. It is the $18 billion business. They all have catheters and then bags associated with thighs. This is a common practice when your nitrogen metabolism goes. Leakage of protein, gout, uric acid, creatinine, ये सब ज्यादा होता है. So please resist. Pulses have to be in that ratio because भगवान ने किया है ये ratio. So don't exceed more than, for 100 grams of food, maximum is 12 grams of protein. Maximum. According to me, 4 to 5 grams is good enough. I got point. Yes, sir. किस बटालियन से पॉइंट है सर? 61 बटालियन सर. यूसी आ गया, बैठो. आगे तीसरी बैठो. सर 221 बटालियन. बोलिए. सर जैसे आपने बताया कि मिलेट्स वेरी गुड है, बट हमारी फोर्स के अंदर हमारे कार्मिक हिंदुस्तान के हर कोने से हैं. कहीं पे नॉर्थ इंडिया के, कहीं पे साउथ इंडिया के, ईस्ट वेस्ट सब जगह से हमारे पास कार्मिक है. तो हमें एक ऐसा रेशियो बताया जाए कि हम नॉर्थ में रहते हुए भी उस फूड हैबिट को मेंटेन कर लें और साउथ में रहते हुए कर लें. हमारा एक मेनू सिस्टम है जिसके अंदर हम मेनू के अंदर कुछ फूड आइटम्स बनाए जाते हैं. तो उसके अंदर किस प्रकार से लें, क्योंकि उसी मेस में खाने वाले नॉर्थ से भी हैं, साउथ से भी हैं, ईस्ट से भी हैं, साउथ वेस्ट से भी हैं. हमारे जैसी फौज के लिए कुछ ऐसा बताइए कि उस मेनू के अंदर बदलाव कर सके और उस मेनू को हम प्रॉपर तरीके से बना सके. या अभी तो ये मिलेट्स का अवेयरनेस अभी शुरू हुआ है. आज तक आपका सब मेनू, रेसिपी, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट फूड. तो धीरे धीरे हम बदलना है, वही कोशिश कर रहे हैं हम सब जगह पे जाके इसका इंफॉर्मेशन देने के लिए. और ये बदलने के बाद हम जब मिलेट्स को खाने के शुरू करते हैं, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है. क्योंकि ये 10 दाना
हम हर जगह पे भर सकते हैं, हर जगह पे उगा सकते हैं. These are the only grains you can grow everywhere, starting from Kashmir to Kanyakumari. So there is no need for transportation, there is no need for this. And जाते जाते अभी अभी शुरू हुआ है, सब लोगों को ये काम चुल मिल के करना है. And we are trying to develop the systems for on mass scale. So अभी अभी मैं बताया हूँ, तो अंबली तो हर जगह पे, हर स्टेशन पे, हर जगह पे हम बना सकते हैं. एंड इनफैक्ट वी हैव मेड द प्रोसीजर्स. हर आदमी घर में बना के पी सकते हैं, लेकिन आप सब लोग, देयर इज नो किचन एंड यू आर ऑल वर्किंग फॉर सम बिग जगह पे आप काम करने के कॉमन किचन्स में भी ये बात हम पूरा कर सकते हैं. एंड इट इज 1000 times cheaper than what you are doing now. 1000 times cheaper. वेरी करेक्ट सर. हमारी सीआरपीएफ में तकरीबन पिछले 7-8 महीने से ये मिलेट्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है. और मेस के अंदर जब हम बनाते हैं, सपोज यहाँ पे मैं नॉर्थ में हूँ, तो उसके अंदर अगर बाजरे की मात्रा ज्यादा हो जाए तो मेरी कंट्री की दूसरी जगह के लोगों को, किसी को कब्जी हो जाती है, और किसी दूसरे आइटम की चीज मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर कुछ और हो जाता है. तो एक ऐसा चीज बताइए जिससे गाइड कीजिए, जिससे कि हम लोग. कब्ज तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम गलत खाना खा रहे हैं. एंड मिलेट्स का अंबली मैं क्या बताया हूँ, किसी दाने का 3-4 दाने बदल बदल के आप 3 हफ्ते पी लिया, आपका कब्ज का प्रॉब्लम गायब हो जाता है. वेरी सिंपल. सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल स्टेशंस, यू डू समथिंग और द अदर और नॉट. ये अंबली का मिशन को चालू कर दीजिए. लेट एवरीवन कम, और व्हेन दे आर गोइंग, लेट देम ड्रिंक दिस and go. It is very cheap. You can make it available for 1000 people on a regular basis, no problem at all. So 50% of your health problems will start disappearing after 5 to 6 weeks. Guarantee. सब लोग अब आजकल गारंटी देने का ट्रेंड बनाया गया है, हम भी गारंटी देंगे. 6 weeks of Ambali, guarantee your problems are going to be less. Thank you sir. Thank you a lot. Thank you a lot. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. चल रही सर कॉन्फ्रेंस जीसी गुवाहाटी से राम अवतार सिंह कमांडेंट सर. मैं रिज्यूम करता हूँ. हेलो सर. सर ओके, बोलिए सर. सर गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर, मैं राम अवतार बोल रहा हूँ, कमांडेंट जीसी गुवाहाटी सर. सर आपका लेक्चर सर इस पे मिलेट्स पे था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे रिजर्वेशंस है सर मिल्क के ऊपर सर. तो जो मिल्क है सर, काऊ मिल्क हमारे देश का ये लाखों वर्ष पुराने से चल रहा है सर. पहले तो हमारे यहाँ लोग लाखों गाय दान करते थे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. आप कहाँ से साहब, आप कहाँ से? सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ सर. अच्छा अच्छा. हाँ सर, ये तो हुई सर ट्रेडिशनल नॉलेज सर, और मैं स्वयं अपना ही बताऊं सर, मैं तो बिना दूध का रह ही नहीं सकता सर, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर. चलो, आपका और हमारा कृष्ण कन्हैया दूध का चोर है या मक्खन का चोर है? सर ठीक है सर, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ सर. आई एम ट्राइंग टू आंसर यू साइंटिफिकली. हाँ ठीक है सर. देयर आर, इमेजिन यू हैव 1 lakh cows. How many cows will give milk? लेकिन सर मुझे इतना पता है सर. नहीं है, हम साइंस बात कर रहे हैं. डोंट टॉक. लेकिन when you have 1 lakh cows, you can only get maximum is 10,000 cows can give you milk. And हमारा गांव कैसे थे previous days में, हर गांव में 2,000 5,000. सुनिए, आप एक सवाल पूछा है, हम समाधान दे रहे हैं. सर ये तो कितना दूध देते हैं, कितना दूध देते हैं? एक काऊ 1 लीटर या 2 लीटर, और बिचड़ा को पीने के बाद हर काऊ से आपको 100 to 200 ml दूध मिलता है. सो कहाँ है मिल्क? वेयर इज द मिल्क? आई वांट टू नो. ओनली किंग्स एंड पालेकर्स, they had the milk, and they are the fellows who had the disease. जब मक्खन खाते हैं आप फर्मेंटेड दूध को खा रहे हैं. सो फर्मेंटेशन मेक्स एनिमल प्रोटीन डिसअपियर.
you have lactobacillus microbe which are there in the green mirchi. उससे आप दूध को दही बनाते हैं. दही भी नहीं खाते थे क्योंकि इतना दूध नहीं था. सो दूध दही को बलन बोलते हैं ना हिंदी में, बलन. वो माथुन तो हिंदी है, उसमें हिंदी नो संस्कृत है, हिंदी में बलन बोलते हैं. बलन मंथन करके बिलोना. हाँ, बिलोना. बिलोना करने के बाद आपको छाछ मिलता है और मक्खन मिलता है. And if दूध was good, why didn't Krishna steal the milk? Because बहुत सारा गाय थे उसके पास. एक बात भी, एक उल्लेखन भी नहीं है कि दूध पिया है तो मक्खन को चुराया है. The reason is it is fermented product which is not animal protein. And बछड़ा को पीने के बाद बचाया हुआ दूध से बनाया है. So that is the logic. So no one drank milk there. जब सम गरडी में जाते थे ये पहलवान, कुछ लोग पीते थे. और आयुर्वेदा में दवा देने के लिए कुछ पत्ता पत्तियों का चूर्ण बहुत कड़वा होता था, उसके जरा से रंगीन करके उसको देते थे. सो दिस इज व्हाट इट वाज. हम धीरे धीरे जब होता जाता है, वी हैव बीन मिस इन्फॉर्मिंग पीपल. And even if you today calculate, this is all that is true. This is all that is true. So ऐसा ही आज तक गेहूं के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है. जब 8-year-old girls are menstruating, no doctor, no scientist talking. The same way misinformation has been spread, not only now, all over the world, all over the times. So don't think everything that is happened earlier is also true and great. We have to do experiments and figure out time to time, understand the natural things and convert our lives to suit the nature. मालूम है क्या? So इतना ही. सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सर. ठीक है सर, आपने जो थ्योरी बताया, कृष्णा ने सर मक्खन खाया, इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो दूध नहीं लेते थे. सर मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको. No, आप पीते होंगे because you have cows. नहीं सर, एक एग्जाम्पल और बताना चाह रहा हूँ मैं. I never drank milk. हाँ नहीं, मैं एक एग्जाम्पल और बताना चाह रहा हूँ सर. मैं 5 years से. Now all over America and New Zealand and there are no cows at all. What do they drink? नहीं ठीक है सर, लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडिया की या इंडिया की जो कल्चर है, मेरे हिसाब से दूध का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है अगर काऊ मिल्क में लिया जाए. और मैं जो आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं सर. I think let us disagree because according to my scientific calculation there was no milk available for. मैं डिसएग्री कर रहा हूं सर. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. बाकी लोग भी है सवाल पूछ रहे हैं, हम उनसे भी सुन लेते हैं. Yes. Take 100 grams of millet, any millet. Soak for 8 hours. Add 2 liters of water, 10 to 20 times water. Boil for 15-20 minutes. And it is good to boil in mud pot. क्योंकि standard temperature and pressure, one of them is varied, not both at the same time. Only mud pot cooking has this wonderful capacity. And if you cook in steel vessel, you can cook, but after that transfer it to mud pot. I would like you to cook in mud pot only. And then as it gets cool, tie a cotton cloth. Don't put a dhakkan. Tie a cotton cloth and leave it for 8 hours if you are in Bangalore or Mysuru. And if you are in Vijayawada or is very hot place, 6 hours itself it is ready. And it will be ready, for 100 grams is ready for almost 10 to 15 people. Each one can drink bigger than this tumbler. That should be finished. You should not keep it for long. If you keep it, you will start making beer. Brewing company will shuru ho jata hai. So don't keep the
ambali in the fridge and say, I will drink afternoon. Do not do that. This simple it is. So if you have 1 kilo, you can make 20 liters and then so many people can drink. And it's very cheap. Even if 1 kilo is 200 rupees, 20 people get it. That means 10 rupees per person or so. And your probiotic capsule, they are selling for 800 rupees to 2000 rupees. And this is the best, natural. In that probiotic capsule, you will not get more than 3 or 4 varieties. Here you get 18,000 varieties of diversified microbes. और किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? Good afternoon, sir. Namaste. This is Jackie Kumar, Assistant Commandant from Central Training College, Mudkhed, Nanded. Namaste. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हमारे मैसेज में, सारे मैसेज में मिलेट्स को जो 30% मिलेट्स और 70% गेहूं रहेगा, तो क्या ये सही है कि रोटी बनाने के लिए 70% गेहूं और 30% मिलेट्स का इस्तेमाल किया जाए? ये सर आपका इंडिविजुअली सही नहीं है, लेकिन आज ऑन अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे ये ट्रांजिशन को लाने के लिए हमारा सरकार सोच रही है. एक ही दिन में ये सब का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. सो इसी की वजह से वो सही हो सकता है, लेकिन आपको कुछ बीमारियां हैं तो ये सही नहीं होता है. बट ऑन ए लार्ज स्केल, इनफैक्ट इट इज a wonderful thing that government is trying to replace step by step to our millet food. So abhi to, as I told you, the whole world has 98 kilos of gehu chawal and only 2 kilos of millets. So overnight we cannot change. So considering this, I have no objection right now. If you are replacing 30% of millets, it's a great change. It's a wonderful thing for you people. So सही है, गेहूं हमारे लिए जहर है, लेकिन धीरे धीरे हम जहर को छोड़कर अमृत तुल्य मिलेट्स के ऊपर और साथ साथ जाना बहुत जरूरी है. राइट सर, थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मिलेट्स को रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जैसे कैलकुलेशन अलग करके आपने बताया सर, वैसे वेजिटेबल में क्या है, उसका रेशियो क्या रहेगा सर? कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए? सब्जी सब कुछ खा सकते हैं. इसी ऑल वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स आर एक्सेलेंट. और आपका पेट के अंदर ये माइक्रोब्स बिठाया गया, देन यू कैन ईट एनी सब्जी, नथिंग विल हैपन टू यू. सब कुछ लोग बोलते हैं ना, ये खाने से मुझे वो होता है, ये खाने से वो एलर्जीज है, वो ऑटोइम्यून डिजीजेस है. ये सब एलर्जीज गायब हो जाता है, बिकॉज योर इम्यूनिटी इज नाउ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, it is strong. So अंबली पीने से आपको सबका सब autoimmune diseases over a period of 6 months will manage. You can, including the so-called vitiligo, will start going away once you build up your immunity. सर जो लोग चिकन, hundreds of vitiligo patients. सर चिकन और अंडा को जो समझौता है सर, वो क्या है रहेगा दूध के रिगार्डिंग सर? Please don't eat meat. Our guts are not made to eat meat. Of course, 98% people don't agree with me, but scientifically, we are not designed to eat meat. Period. धन्यवाद सर. और ये आज बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमको मिली है. हम इसके लिए हृदय से धन्यवाद तो देते ही हैं सर को, कि हमारे सभी साथियों की जिज्ञासा भी उन्होंने शांत की. और अब समय है जब हमारे बीच में इतने प्रतिभा संपन्न बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी बैठे हुए हैं, तो उनके सम्मान करने का मैं आदरणीय श्री आईजी सर से अनुरोध करूंगा कि वे सीआरपीएफ की ओर से इन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें, ताकि हमारे मन में और उनके मन में, मन मस्तिष्क में हमेशा इस कार्यक्रम की अमिट छाप बनी रहे. आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ
सर को ये बल की ओर से सम्मान दें। महोदय ने पूरे बल की ओर से इस स्मृति चिन्ह को स्वीकारा, हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और और इसी के साथ अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा श्री टी विक्रम, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक कर्नाटक केरल सेक्टर को, कि वे आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में जो हमें अनुभव मिले हैं उसके लिए इस मंच को, अनुभव को साझा करें और सभी सदस्यों को भी संबोधित करें। Respected chief guest of today, Padma Shri Dr. Kadarwali sir, senior officers present here, and those who have joined from across the country, and fellow force personnel. It's indeed a very momentous moment for all of us today to have heard such an eye-opening talk of Dr. Kadarwali. And all of us have been hearing about millets. It has have been for the last 1 year, which was the United Nations declared Year of Millets. A lot of awareness has increased, and we have also tried to inculcate it in our foods, but nothing like hearing it from the horse's mouth. And today we had the honor of hearing from, I would in fact say, the father of the next revolution, which was going to be the Siridhana revolution, Dr. Khadavali sir. And in fact, he has such a vast knowledge about the human metabolism and physiology that his insights are really wonderful. And as you're aware, sir, we are, as per the directions of the Government of India and the Directorate, the CRPF has achieved a level of 29.6% of millets in our uses in the different messes, as you heard, by combining with wheat and rice. But definitely the effort will be to move for a greater percentage. And we all should agree that knowledge about something is one thing, but making it a habit is something else. So we all have to now move to the next level and try to incorporate these magic foods into our diet. And I think, as sir very rightly pointed out, the best way to start is by using ambali. And at a personal level, I think we all should resolve, and I personally resolve, sir, that for the next 21 days, I'll definitely try this ambali and see what effect it has on us. Ultimately, the proof of the pudding is in the eating. So I'm sure if all of us on an experimental basis across the force try ambali with all the force personnel, then their own experiences would be sufficient to help them to ask for more millets in the diet. And that is how we can probably take this to the next level. And definitely, sir, your confidence in advocating this as the magic remedy for all diseases is something that's really wonderful to hear. And we should definitely try to see how it works in our personal lives. And this brings to my mind the saying,
long back when I used to hear about fitness, even the people in the gym, the coaches, and all used to say the fitness begins in the kitchen. So this awareness is now coming back into all of us, and I'm sure we'll all move towards a healthier force. And your interaction today is definitely a push in that direction. And I'm very grateful to the Directorate, CRPF Directorate, for facilitating this interaction with Dr. Kadarvalli. It was at their direction that we are able to make this interaction available to all the force personnel across the country. So once again, sir, thanking you very much for taking time out from a busy schedule and traveling from Mysore exclusively for this interaction. I assure you that at least under my jurisdiction, we'll start implementing your sutras in small, if not larger ways in the coming days. Thank you. Jai Hind, sir. धन्यवाद सर। और अब समय है जब हम अपने मुख्य अतिथि के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें, और इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री हिमांशु कुमार, उप महानिरीक्षक गुप्त केंद्र से, कि वे कृपया मंच पे आएं और महोदय का, डीजी सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इतना जोर दिया, और आईजी सर का धन्यवाद ज्ञापित। परम आदरणीय द मिलेट्समैन ऑफ इंडिया पद्मश्री डॉक्टर कादिरवली, समादरणीय श्री टी विक्रम महानिरीक्षक कर्नाटक केरल सेक्टर, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण व प्यारे जवानों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आज इतने प्रतिभा संपन्न और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी पद्मश्री डॉक्टर कादिरवली, जिन्होंने पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक श्री धान्य, जिन्हें हम मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी के नाम से जानते हैं, के बारे में विगत 2 दशकों में गहन शोध कार्य किया है, और वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में अन्नदाताओं को श्री धान्य की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, से बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी मिली है। मैं पूरे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने इस आयोजन के लिए अपना अमूल्य समय देकर बल के हम सभी लोगों को श्री धान्य को अपनाते हुए पौष्टिकता से भरपूर जीवन भोजन शैली के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया। महोदय को पुनः हार्दिक धन्यवाद। इस अवसर पर मैं श्री टी विक्रम पुलिस महानिरीक्षक कर्नाटक केरल सेक्टर का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से श्री धान्य के उपभोग के लिए प्रेरित करने वाली इस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी, और साथ ही आपने अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन भी दिया, जिससे हम इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ सफल बना सके। महोदय का हार्दिक धन्यवाद। इस अवसर पर विभिन्न कार्यालयों से शामिल हुए सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों व जवानों को भी हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी ने इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के दौरान दी गई उपयोगी जानकारी से आप सभी लाभान्वित होंगे और पौष्टिकता से भरपूर भोजन शैली को अपनाएंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, तो कृपया आप सभी खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन तालियों के साथ सर के लिए, और साथ ही साथ ये दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी मिलेट्स को अपनाएं। धन्यवाद।